सर्व मंडळी आली का? तर आधी इंग्लिशमध्ये सांगते आणि मग मी मराठीत सांगेन, कारण काय ह्या लोकांना अगदी काहीच समजत नाही, ते बरोबर नाही. In these modern times, a place which is supposed to be a holy place becomes the most unholy place. It's such a topsy-turvy condition these days. And when we are trying to establish something very fundamental, it's like a little seedling that has to come out of the stones. It has to fight lots of things, so we have to keep our brains intact and be sensible about everything, and try to see what we can achieve through our patience and understanding. It's very important. Today I think is a very great day for all of us, because this place is the place of Virat, of Shri Vithala. It's the place where Shri Vithala appeared to a devoted son, and when he asked him that you better stand on a break, he stood there, and they say that he stood there waiting. Some people say that the statues that we see came out of the Mother Earth on this sand, and that's what Pundarikaksh carried, saying that these are the ones who came to see me and my parents. I was busy with them, so they are standing on the same brick which I threw. Now the whole story has to be taken in a very sensible way, with a common sense in it, that God Himself is capable of all kinds of miracles. We who are created by God are doing some things which look miraculous. Say, if you take about 100-year-old situation of this world, we can say that today we are seeing many things which could be miraculous. 100 years back, nobody could have thought that you could have all these arrangements done here in such a far-fetched places. But all these miracles come from the power of God. So, we are the creator of that wee bit, very wee bit of that miracle. So, all the miracles of God cannot be explained and should not be explained. They are beyond our minds. And to make people feel the presence of God, God can do anything. He can move into all the 3 dimensions and also in the 4th dimension. He can do whatever He feels like. That's what you have seen now in your every day-to-day life. How many miracles take place to all of you. And you can't understand how it works out. Even it works out on things which are not living. And people are quite amazed how these things happen. So we have to believe now, after seeing all this ourselves, that He is God. And He can do anything that He feels like. And we are nothing. We are nothing. There should be no rationality about it, of understanding God's miracles. How can it be? How could it be? You can't explain. Only when you achieve that state of mind, where you believe through your experiences
that God is all powerful. It's very difficult. This concept is very difficult because we are limited people. We have limited powers. We cannot understand how God could be all powerful because we haven't got the capacity. So this God, who is our creator, who is our preserver, the one who desired that we should exist, who is our existence itself, is an all-powerful God. All-powerful. He can do whatever He likes with you. He can create another world. He can destroy this world. It's only if He has to desire. My idea of coming to Pandharpur for Shiv Puja was this, that Shiva represents the spirit. And the spirit is residing in all of you, in your hearts. The seat of Sadashiva is on top of your head, but is reflected in your heart. Now your brain is the Vittala. So to bring spirit to your brain means enlightenment of your brain. Enlightenment of your brain means the limited capacity of your brain has to become unlimited in its capacity to realize God. I will not use the word understand, but to realize God. How powerful He is, how miraculous He is, how great He is. The another is that the brain of man can create, of course, out of the dead. But when the spirit comes into brain, then you create living things, living work of Kundalini. Even the dead start behaving like living because you touch the spirit in the dead. Like the nucleus inside every atom or a molecule has the spirit of that molecule. And if you become your spirit, we can say the brain of a molecule or an atom is like the nucleus, body of the nucleus. But the one that controls the nucleus is the spirit that resides within the nucleus. So now you have got the attention or the body, the whole body of the atom, then the nucleus, and inside the nucleus is the spirit. In the same way, we have this body, the attention of the body. And then we have the nucleus is the brain.
and the spirit is in the heart. So the brain is controlled through the spirit. How? That around the heart there are 7 auras. Which can be multiplied into any number. 7 raised to power 1600, which are the ones which watch the 7 chakras raised to power 1600. 16,000, sorry. Now this spirit is watching through this aura. Watching, I am again saying watching. Through this aura. Can you sit down? Can you sit down? I think would be better. There's no need to bother once you have put it up. This aura is watching the behavior of your 7 centers in your brain. Is also watching all the nerves that are working in the brain. Watching again. But when you bring the spirit into your brain, then you go 2 steps ahead. Because when your Kundalini rises, she touches the Sadashiva, and Sadashiva informs the spirit. Informs in the sense reflects in the spirit. So that's the first state where the watching auras start communicating to your different chakras in the brain and integrating it. But when you bring your spirit to your brain, this is the second state. Then you really become self-realized in the full way. In the full way. Because then yourself, that is the spirit, becomes your brain. Action is very dynamic. It opens then the 5th dimension in the human being. First, when you become realized, collectively conscious, and start raising the Kundalini, you cross the 4th dimension. But when your spirit comes into your brain, then you become the 5th dimension, means you become the doer. Our brain now, for example, says, alright, lift this thing up. So you touch it with your hand, you lift it up. You are the doer. But when the brain becomes the spirit is the doer. And when spirit is the doer, then you become a complete Shiva, self-realized. In that state, if you get angry, you are not attached.
You are not an attached person to anything whatsoever. If you possess anything, you are not attached. You cannot attach because spirit is detachment, complete detachment. You don't bother about any attachments whatsoever. Even for a second you are not attached. Now, I would say, to understand the detachment of spirit, we should study ourselves very well, clearly. How are we attached? We are attached, firstly, by our brain. Mostly by our brain. Because all our conditionings are in our brain and all our ego is also in our brain. So all emotional attachments are through our brain and all our egoistical attachments also are through our brain. That's why it is said that after realization one must try to practice the Shiva Tattva by practicing detachment. जरा मला शाल दे. जसं शिवाची फार थंड असणार सगळं. Now, how do you practice this detachment? सगळ्यांना इंग्लिश समजता ना थोडं थोडं? Because we get attached to something, of course through our brain, but through our attention. So we try to do what we call Chitta Nirodh, is to control your attention. Where is it going? In the practice of Sahaja Yoga, if you have to rise higher, you have to improve your own instrument and not the instrument of others. This is one thing one should know. For definite. Now you just watch your attention, where is it going? Watch yourself. As soon as you start watching yourself, your attention, you will become more identified with your spirit. Because if you have to watch your attention, you have to be your spirit. Otherwise, how will you watch it? So now see, where is your attention going? First, the attachment is in all gross ways to your body. So we see Shiva, there is no attachment to his body. He sleeps anywhere. He goes to the cemeteries and he sleeps there. Because he's not attached, he can never be caught up by any booths or anything, nothing of the kind. He is detached. The detachment is to be watched and seen through your own attachments. Now, because you are realized souls, not yet, the spirit has not come into your brain, of course, but still you are realized souls. So what you can do is at least to watch your attention, you can do that. You can watch your attention very clearly by seeing where your attention is going. And then controlling your attention also you can do. Very simple. To control your attention, you have to just remove your attention from this to that. Try to change your priorities. All this has to be done now, after realization, a complete detachment. So the body demands comfort. Try to make body uncomfortable a little bit. Try. What you think it to be comfortable, try to make it little uncomfortable.
That's why people went to Himalayas. See, coming to this place itself has caused us a lot of problems. But going to Himalayas, you can imagine. So after realization, they used to take their body to Himalayas. All right, go through all this. Let's see how you act. So what you call the penance side starts now. In a way, it's a penance which you can do very easily because now you are realized souls. With enjoyment, little, try to make this body. For Shiva, it doesn't matter whether he is in a cemetery or in his own Kailasha or anywhere. Where is your attention is, you see. That your human attention is hopelessly bad. Very entangled nonsense it is. We did this because of this. There's an explanation. Or others have to give an explanation. No explanation is needed to be given or to be accepted or to be asked for. No explanation. To exist without explanation is the best way. In a simple Hindi language, Jaise rakhahu taise hi rahu. Whichever way you keep me, I'll remain in that state. And I'll enjoy. Further in this poem, Kabira says, if you make me go on an elephant, means the royal conveyance, I'll go. If you make me walk, I'll walk. Jaise rakhahu taise hi rahu. So no reaction on that part. No reaction. First no explanation, no reaction. Now, second is about food. So that's the first seeking human beings had as animals. No attention on food. Whether you have salt or not, whether you have this or that, no attention on food. Actually, you should not remember what you ate this morning. But we think as to what we are going to eat tomorrow. We consume food not for running this body, but for sort of a more satisfaction of tongue pleasures. Once you start understanding that pleasure is a sign of gross attention, any kind of pleasure is a very gross sensationalization. Sensations. Very gross it is. But when I say no pleasures means, that means that you should become serious people and people of sort of as if somebody is dead in your family. But you should be like Shiva. So detached. She came on a bull which was running very fast to get married. And sitting on a bull with 2 feet like this, you see. And the bull is running fast and he is holding the bull. The feet like this. And he's coming for his wedding. And with him are coming people with one eye, without noses, all kinds of funny people coming with him. And his wife feeling quite embarrassed at the nonsensical things people are talking about Shiva. He's not bothered. What's his reputation would be, this thing. But that doesn't mean that you become hippies. You see, this the problem is that once you start thinking like that, you become hippies. Many people believe that if you try to behave like Shiva, you become Shiva. Many believe that way. That if you
take ganja, you become Shiva, because Shiva is to take ganja, because he was consuming all that to finish off from this world. For what does it matter whether it's a ganja or anything? Give him anything, he'll never get drunk. No question. He's consuming all that. Or they think if they live like Shiva, the way he was detached about things, least bothered about his appearances. What appearance Shiva needs is that whatever he appears as is beauty. He doesn't need anything to be done. So, attachment to anything is ugliness. It's ugliness. It's nonsense. But you can dress up whatever we do. Or even if you are in the most ordinary dress, you look the most magnificent person. But it's not that if you say that, all right, so in these circumstances, let us go about on one sheet wrapped around. The beauty that has evolved within you through spirit gives you that power that you can wear whatever you feel like. Makes no difference to your beauty. Your beauty is there all the time. But have you achieved that state? And that state only you achieve when your spirit enters into your brain. With ego-oriented people is more difficult. And that's why they cannot enjoy things. At the slightest pretext they topple down. And spirit, which is the source of joy, just doesn't come. Doesn't show. The joy is beauty. The joy itself is beauty. But that is a state one has to achieve. Attachments come by various methods. If you go a little ahead with it, then you have attachments of your family. What will happen to my child? What will happen to my husband? What will happen to my mother, to my wife? This, that nonsense. Who is your father and who is your mother? Who is your husband and who is your wife? For Shiva, he doesn't know all these things. To him, he and his power are inseparable things. So he stands as singular personality. There is no duality. When there is duality, then only say, my wife. You can't say, my nose, my ears, my hands, my, go deep down. Till you say my, there is some duality. But when I say I, the nose, then there is no duality. Shiva the Shakti, Shakti the Shiva. There is no duality. But we live throughout on our duality, and because of that there is an attachment. If there is no duality, what is the attachment? If you are the light and you are the lamp, then where is the duality? If you are the moon and you are the moonlight, then where is the duality? If you are the sun and you are the sunlight, you are the word and you are the meaning, then where is the duality? But when there is this separation, there is duality. And because of this separation, you feel attached. Because if you are that, how will you be attached? Do you see that point? Because there is a difference and a distance between you and yours. That's why you get attached to it. But it's me. Who is the other? This whole universe is me. Who is the other? Everything is me. Who is the other?
It's not that it's a brain wave or an ego brain wave. बसा 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 मी मागीन जेव्हा लागलं ते सगळ्यांना डिस्टर्ब होतंय. बसा, फार गंभीर विषय होऊन राहिला. त्यावेळेला काही नको मला. 9 तास जरी बसले ना तरी मला काही लागणार नाही. बसा, आरामात बसा, डिस्टर्ब नाही करायचं, बसून घ्यायचं. So who is the other? Nobody. That's only possible when your spirit comes into your brain and you become part and parcel of Virat itself. Virat is the brain, as I told. Then everything that you do, when you show your temper, when you show your affection, when you show your compassion, anything, is the spirit that is expressing. Because brain has lost its identity, the so-called limited brain. It has become the unlimited spirit. I do not know. I really do not know how to give an analogy to a thing like that. But what we can do is to understand it. That if a color is dropped in the ocean, the ocean becomes colorful. Is not possible. But try to understand. If a little color, limited color, is dropped into the ocean, the color loses its identity completely. Think of the other way around. If the ocean is colored and is poured into atmosphere or onto any part, any little wee bit, or onto any spot, onto any atom or anything, it all becomes colorful. So the spirit is like the ocean which has the light in it. And when this ocean pours into the little cup of your brain, the cup loses its identity and everything becomes spiritual. Everything. You can make everything spiritual. Everything. You touch anything is spiritual. The sand becomes spiritual. The land becomes spiritual. Atmosphere becomes spiritual. Celestial bodies become spiritual. Everything becomes spiritual. So is the ocean that is the spirit, while your brain is limited. So the detachment from your limited brain has to be brought in. All limitations of brain should be broken so that when this ocean fills that brain, it should break that little cup. And every bit of that cup should become colorful. The whole atmosphere, everything, whatever you locate should be colorful. Color of the spirit is the light of the spirit. And this light of the spirit acts, works, thinks, coordinates, does everything. This is the reason today I decided to bring Shiva Tattva to the brain.
The first procedure is to take your brain towards the Shiv Tattva by telling it, see, where are you going, Mr. Brain? You're putting attention to this, you're putting attention to that. Getting involved now, detach. Become the brain yourself, only the brain. Detach. And then take this detached brain, completely filled with the color of the spirit. It will automatically happen. As long as you will have these limitations to your attention, it will not happen. So one has to really deliberately do this tapasya. Every individual. I am with you. So you don't need any puja that way. But that state has to be achieved. And for achieving that state, you need the puja. I hope so many of you will become the Shiva Tattvas in my lifetime. But don't think I am asking you to suffer. There is no suffering in this kind of an ascent. If you understand that this is the complete joy state, that is the time when you become Nirananda. That's the joy named in the Sahasrara. The name of the joy is Nirananda, and you know your mother's name is Nira. So you become Nirananda. So today's worship of Shiva has a special meaning. I hope whatever we do in the outward way, in a gross way, happens also in the subtler way. I am trying to push your spirits into your brains, but I find it rather sometimes difficult because your attention is still involved. Try to detach yourself. Temper, lust, greed, everything. Try to reduce. Like in food, I told today, Warren, ask them to eat less, not like gluttonous people. You see, once in a while, on a day of big banquet or anything, you eat more, but you can't eat every time like that. It's not a sign of Sahaja. Try to control. Try to control your speech. Whether you express temper in your speech, or you express your compassion, or you are artificially compassionate. Try to control. I know some of you may not do much. It's all right. I'll try to tell you many a times. I'll try to help you. But most of you can do it. And you should try that. So on a deeper level from today we start our Sahaja Yoga, where some of you may not attain, but most of you should try to go deeper. Everyone. For that you don't need persons who are very well educated or well placed. No, not at all. But people who meditate, dedicate, go deeper, because they are like the first roots which have to reach for others much deeper, so that others can follow. Now for today's puja, we'll have a very short Ganesh Atharvashesh. Just not washing my feet or anything much on it. But is a saying of Atharvashesha. And you can put म्हणजे शिवपूजेला पाय वगैरे धुवायची काही गरज नाही, कारण ते शुद्धच आहे.
Shiva is all the time clean, pure, immaculate. So what are you going to wash the immaculate? One may say that, Mother, when you wash your feet, you get your vibrations in the water, but so detached that there's no need to wash at a state where you get completely washed, completely cleaned out. Then we'll have a Devi Pujan, because Gauri, who is virgin, is to be worshipped. So we'll say the 108 names of the Virgin. Then we'll do the Shiv Puja. I'm sorry, I cannot tell you everything in one short speech all about this. But detachment must start expressing itself in your realization. Detachment. What is surrendering is nothing. Because when you are detached, you are surrendered. Automatically. When you are holding on to other things, you are not surrendered. That's all. What is there to surrender me? I am such a detached person, I don't understand all that. What am I to get out of you? I am so detached. Nothing. So today I hope we all pray that, O Lord, give us strength and that source of attraction by which we give up all other attractions of all the pleasures of joy, of ego, of everything that we think of. But we should fall into the pure joy form of the Shiva Tattva. Absolutely. I hope I have been able to explain to you why I am here today and why today is a very big day. You all who are here are especially very lucky people who should think that God has been kind to you, that He has chosen you today to be here to listen to this. And then once you get detached, you'll start feeling responsible. Abhiyukt, responsible. But the responsibility not giving ego, but responsibility which is executing by itself, which is expressing by itself, manifesting by itself. May God bless you. आज के शुभ विशेष रूप से मेरे हृदय में अचानक कितने दिनों से बात है ये आश्रम कम से कम हिंदुस्तान में बन जाए और उसके बाद और कोई आश्रम बन सकते हैं। हम लोग सब चीज ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन इस कलयुग में ईमानदारी से जो काम किया जाता है उसके लिए काफी विपत्तियां और तकलीफ संकट दिखाने पड़ते। हालांकि सबसे बड़ा समाधान यह है कि हम लोग ईमानदार हैं और सहयोग में एक बात जाननी चाहिए कि जो चीज जिस वक्त बननी है उस वक्त जरूर बन जाएगी, उसमें रुकावट नहीं हो सकती। अगर कोई रुकावट हुई है तो जरूरी थी, अगर समय उसमें ज्यादा लग गया या कम लग गया, रुपया अधिक लगा या कम लगा, ये सब जरूरी है। इसलिए
किसी भी चीज में दोष निकालना नहीं चाहिए, लेकिन उसका आनंद पूरा प्राप्त करना चाहिए। और मन में सोचना चाहिए कि दिल्ली में सबसे पहले हिंदुस्तान का सहयोग का आश्रम बनाया गया, तो अभी तक सारे भारतवर्ष में कोशिश करने से भी नहीं बनी। ये कोशिश 18 साल से हो रही थी और आज ये आश्रम देख बड़ा है। इसका पूरा उत्तरदायित्व आप लोगों ने लिया था और सारा श्रम आपने किया, और इसलिए इसका श्रेय भी, सारा क्रेडिट भी आप ही। जब आप लोग मुझे किसी चीज का श्रेय देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतने अकर्म में उतर गए हैं कि आप जानते ही नहीं कि सब आप ही कर रहे हैं। अगर सब काम मुझसे ही होता तो मुझे आपको जोड़ने की क्या जरूरत पड़ जाए। आप ही मेरे हाथ, आप ही मेरे आंख और आप ही मेरे कान। आपके बगैर मैं कोई भी कार्य नहीं करती, और इसलिए मैं आपसे शरणागत हूं। एक तरह से कहती हूँ कि जब भी आप लोगों को मेरे लिए हुक्म हो उस जगह मैं हाजिर हो जाऊंगी, और जहां कहोगे वहां मैं स्थापित हो जाऊंगी। लेकिन इसमें आपका जो हमारे ऊपर अधिकार है वो बना रहना, वो पूरी तरह से बना रहना चाहिए। और जब वो अधिकार बना रहता है तो उस अधिकार की पूर्ति भी बहुत आसानी से हो जाती है। अब मुझे तो पता नहीं मैंने इसको कितना रुपया दिया कि क्या दिया, ये तो सारा सदुपयोग का रुपया मेरे जेब से तो मैंने इस पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं अपने जेब से भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो आप यहाँ कमरा बना रहे हैं, उसका थोड़ा सा तो कुछ मुझे भी पैसा देना। आप लोग तो बना ही रहे हैं, लेकिन मुझे भी कुछ देना चाहिए। सहयोग एक आनंद का पर्व है, एक आनंद का सागर। हर चीज से आपको आनंद कर मिले तो सोचना चाहिए कि आप सहयोग की संवेदनशीलता को प्राप्त कर दिए, लेकिन आप पे वो आनंद, उसकी प्रतीति न हो तो सोचना चाहिए कि आप में अभी कमी रह। इसको बनाने में जो कुछ भी कष्ट हुआ हो, जो कुछ भी परेशानियां हुई और जो कुछ भी आपको भागा पड़ा, ये सब कुछ एक खेल, ये सब एक खेल। और इस खेल को हमने जिस तरह से खेला उसका मजा हमने उठाया। घर बनाना, दुकान बनाना, विश्व बनाना, ये सब एक खेल। अगर आप विश्व के बनाने पर ये सोचें कि कैसे बनेगा, क्या होगा, तो उसका मजा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप बना रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से इस चीज को कर रहे हैं। सिर्फ आपका चित्त अगर स्वच्छ हो, चित्त शुद्धि हो और चित्त में यही विचार हो कि कोई चीज कमी है और ये परमात्मा के कार्य के लिए हम कर रहे हैं, तो आनंद द्विगुणित हो जाता है और भी बढ़ जाता है। उसकी लहरें और भी आपको लपेटती चली जाती है और आप बड़ी गहरी ऐसी एक अनुभूति में जाते हैं जाकर आप कहते हैं कि अब मस्त हुए फिर क्या बोले। वही हाल आज मेरा हो रहा है। ये सारा देख करके वैसे तो सारा विश्व ही बनाया, लेकिन ये जो भी बनाए, जैसे गुड़िया के खेल में जब आप कुछ गुड़िया का छोटा सा घर बनाते हैं, उसको देख करके एक बड़ा अद्भुत सा आनंद होता है। ऐसा ही इस विश्व में बसा हुआ ये हमारा आश्रम, इसके प्रति मुझे वही एक अनुभूति प्रतीत हो रही। आज का दिवस भी बड़ा शुभ है। क्या शिव तत्व के दिन
उस दिन हमारे अंदर शिव तत्व प्रकटित होता है, वो आज का दिन, जिस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। शिव मने जो अटूट, अटल, अविनाशी। और आज के दिन कोई ऐसी चीज बन गई जो अटूट, अचल और अविनाशी, इन तीन स्तंभों को प्रकाशित करने वाली है। ये तो एक सारे संसार के लिए बड़ी सौभाग्य और बड़ी शुभ बात है। इसे हम लोग इस तरह से समझें कि सारे विश्व में हलचल और दुनिया भर की आफत, कलयुग की घोर यातना है और उसका प्रकांड तांडव चला हुआ है। ऐसे वक्त एक मेखला जरूर होनी चाहिए जिसको हम पकड़ लें। उस मेखला के लिए एक गणेश का तत्व बिठाना पड़ता है। उस गणेश तत्व को बिठाने के लिए कोई न कोई पृथ्वी तत्व की चीज खड़ी करनी पड़ती है। उसी प्रकार आज गणेश तत्व यहाँ बताया गया, एक पवित्रता यहाँ लाई गई। ये एक पवित्र मंदिर सा बन गया है और यहाँ से पवित्रता सारे संसार में घूम सकती है और उसका जो कुछ भी कार्य है वो बहुत सुचारू रूप से हो सकता है। हर तरह का आक्रमण, आतताई लोगों को ये एक छोटा सा दिखने वाला आश्रम ही बहुत कार्य करता है। तो जिसे कहते हैं कि न्यूक्लियर, इस तरह से ये एक भारतवर्ष में आज न्यूक्लियर शुरू। सर्वप्रथम संसार में चीज बनाई गई वो श्री गणेश, लेकिन उनसे भी पहले और आदिशक्ति से भी पहले जो तत्व था, उस तत्व को हम ये कहेंगे कि वो सदाशिव स्वरूप, सदाशिव। उस सदाशिव तत्व से ही उनकी जो शक्ति आई उसे हम आदिशक्ति कहते। तो सबसे पहले जो चीज संसार में रही और रहती है, हमेशा रहेगी, वो चाहे सुप्तावस्था में होती है, तब कोई सी भी सृजन, क्रिएशन नहीं होता है, लेकिन जब वो जागृतावस्था में रहती है तब सारा सृजन होता है। उस वक्त हर तरह का सृजन आते रहता है, फिर उसके बाद अवतरण आते हैं और सब तरह के कार्य होते हैं और फिर वही जाकर की चीज जब सो जाती है तो सब चीज को सुप्तावस्था में चला जाता है। ये जो सुप्तावस्था में जाने की स्थिति है, उस स्थिति से पहले ही हम लोगों को उस जागरण में उतरना चाहिए जो शिव तत्व है। शिव का तत्व समझना एक हिंदुस्तानी के लिए कठिन बात नहीं, क्योंकि अपने यहाँ भारतवर्ष में जो कि भारतीय हैं, जो कि विदेशी लोग हैं या विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं, उनकी बात, और सर्वसाधारण किसी भी भारतीय को आप कर देखें तो वो यही कहेगा कि इस अविनाशी तत्व को ही पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब चीजें विनाशी, ये हम लोग जानते हैं। सारी चीजें विनाशी हैं और विनाशी चीजों के पीछे दौड़ना ये कोई भी अकल की बात नहीं। विनाशी चीजें जहां है वहां है, अपनी सीमा में रहे, लेकिन उनका जरूरत से ज्यादा महत्व करना विनाश की ओर जाता है। यही चीज है जो शिव तत्व है, इसे हमें प्राप्त करना है, जो सारी हमारी कार्य पद्धति गतिविधियों का लक्ष्य भी है और वही हमारा केंद्र बिंदु और स्रोत भी। यही चीज विदेश में लोग भूल गए। विदेश में लोग विनाशी चीजों को बहुत महत्व देते और विनाशी चीजों के लिए भागते हैं, उसी को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी को सोचते हैं कि उसी से हम सब लाभ कर सकते। उनको अविनाशी की शायद खबर भी नहीं बहुत से लोगों को, और जिनको है वो भी बस उसको विचारों में और तत्वों में और इस चीज में बांध करके एक बड़ा भारी सा कहना चाहिए कि प्रबंध सा बनाते, लेकिन उसमें जान नहीं, उसमें प्राण नहीं। उसके जो प्राण है वो है शिव तत्व, और शिव तत्व जो है वो हम लोगों को मालूम और हम जानते हैं इस अविनाशी शिव तत्व से ही सारा कार्य। अगर हमारा मस्तिष्क
घर किसी तरह से काम से चला जाए तो भी हम जिंदा हैं। अगर हमारा हाथ टूट जाए तो भी हम जिंदा हैं। अगर हमारा पैर टूट जाए तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी भी टूटने पर हम जिंदा रह सकते हैं। पर जैसे ही हृदय बंद हो जाता है जहाँ शिव का तत्व है, फिर हम इस संसार में नहीं रह सकते। तो शिव के तत्व के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये अत्यंत तत्व भोला है। भोलेपन का ये मतलब नहीं कि मूर्ख, भोलेपन का मतलब है पवित्र, अत्यंत पवित्र है। जैसे कि एक पवित्र चीज आपने यहाँ बिछा दी हो, इस पर एक छोटा सा भी दाग लग जाए तो फौरन दिखाई दे देगा। इसी प्रकार शिव तत्व का है कि जैसे ही थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो शिव तत्व के प्रकाश में वो एकदम साफ दिखाई देगा। अब इस शिव तत्व को अगर आप ऐसा समझे कि हमारे जीवन में इस शिव तत्व का क्या होता है, तो जो आज आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य की जो आपके अंदर अनुभूति होती है, ये ही शिव तत्व का प्रकाश है। और जब तक शिव आपके अंदर जागृत नहीं होते, जब तक आपकी आत्मा आपके अंदर जागृत नहीं होती, आप इस शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी प्रचिति नहीं कर सकते, उसे जान नहीं सकते। उसकी प्रचिति होना ही एक बोध है। इसी को विद कहना चाहिए जो वेद है, इसी को नॉलेज कहते हैं जो ज्ञान है। यही शिव तत्व को जानना है। अब शिव तत्व है या नहीं ये तो आप जानते, इसमें आपको शंका नहीं है कि शिव तत्व है या नहीं, किंतु शिव तत्व पे हम जमे हैं या नहीं ये सोचना। शिव तत्व का सबसे बड़ा कायदा ये है, ये प्रेम, प्रेम का स्रोत, प्रेम का लक्ष्य, प्रेम का केंद्र। ये प्रेम सबसे बड़ी चीज अपने हृदय को खोल। शिव तत्व को अपने अंदर समाने का मतलब है अपने हृदय को खोल, हृदय को खोल करके बिल्कुल खुली तबीयत से रहना। इसके विरोध में क्या क्या चीजें बैठती हैं वो हमें देखना। इसके विरोध में जब हमें एक तो स्वार्थ, मैं ममत्व, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, जहां ममत्व शुरू हुआ वहां शिव तत्व खत्म होने लगा। अब शिव जी को देखिए कहाँ रहते, कैलाश पर, जहाँ कोई भी नहीं रह सकता, वहां बसे हुए। कपड़े क्या पहनते हो तो आप जानती हैं, अलंकार उनकी क्या है, जिस बस्ती में वो पहनते हैं वो भी आप जानते हैं। लेकिन उनको कोई आराम की जरूरत नहीं, तो मुझे कौन सा आराम मिलेगा। हम लोग पहले सोचते हैं भाई वहां जा रहे हैं तो वो कितने स्टार होटल है, वहां क्या इंतजाम होगा, वहां ये चीज ठीक होगी या नहीं होगी, वहां किस तरह से रहने को मिलेगा, वहां कौन सा इंतजाम होगा और किस तरह से खाना होगा, वो इस चीज की परवाह नहीं। शिव तत्व वालों का पहली पहचान है वो मस्ती में कहीं भी रहते। आप उनको जंगल में सुला दीजिए तो जंगल में आराम से, महलों में रख दीजिए तो महलों में आराम है। जहां है वहां वो शिव है, उससे ऊंची कोई चीज है ही नहीं जिसका वो आनंद उठा सके, क्योंकि स्वयं आनंदमय होने की वजह से। और किस चीज से आनंद उठाना, बाकी तो सब कचरा ही है। जो असली परम चीज है वो उन्होंने पाई है अपने अंदर में, शिव की, और उस शिव के आनंद में ही वो पूरी तरह से जमे हुए हैं। तो उनके लिए ऐसी कौन सी विशेष चीज होगी जो उनको दबा सकेगी या उनको मोहित कर सकेगी, ऐसी कोई सी भी चीज उनके लिए नहीं। इसी से आप जान सकते हैं कि अगर हमारे अंदर शिव तत्व चलाता है तो पहले तो हम ऐसे इंसान हो जाते हैं जिसे कहते हैं अवलिया। माने आप कहीं सो लीजिए, आप कहीं भी बैठ लीजिए, कहीं भी खाना खा लीजिए, किसी वक्त भी खाना खा लीजिए, कितना टाइम है सो लें, और ये घड़ी जो है ये बंद हो जाती है, क्योंकि आप कालातीत हो। किस वक्त जाना, किस वक्त आना, किस वक्त क्या करना, उसका विचार ही नहीं रहता। सब ये कि हो रहा है, जो भी चल रहा है ठीक है, अभी यहाँ बैठे तो यहाँ बैठ गए, कल कहीं तो वहां जाके बैठ जाए। उसमें ये विचार ही नहीं आता है कि भाई अब टाइम हो रहा है, चलो अब वहां पे ऐसा करना है, ये करने का है। ये सब दिमागी जमा खर्च उसमें होता है, क्योंकि जो हो रहा है वो काल चक्र के हिसाब से ठीक ही हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए व्याकुल होने की बात।
जब इसके लायक लोग हो जाएंगे तब ये पूरा हो जाएगा। जब इसमें रहने लायक लोग हो जाएंगे तभी ये पूरा होगा। नहीं तो यहाँ पर क्या कौन रहेगा? जानवर आके रहेंगे, चिड़िया पंछी रहेंगे। मैंने तो इनसे कहा था पहले तय कर लो दिल्ली वाले कौन रहने वाले हैं यहाँ पर। उनका माँ आप तो रहेंगे। मैंने कहा मैं कौन से आश्रम में रहने वाली हूँ ये बता दीजिए। तो एक मेरे लिए मत आश्रम। आप में से कितने लोग आश्रम में रहना चाहते हैं ये पहले जानिए, क्योंकि हिंदुस्तानी तो बहुत ही ज्यादा सीमित है। उसको तो अपना घर चाहिए, अपनी बीवी चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, और बीवी पे रोक जमाने के लिए चाहिए। ऊपर से ये कि उनको मोटर चाहिए अपनी, अपना, मेरा, ये चीज मेरी, ये मेरी चीज है, मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मेरी बीवी मेरे पास है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सामूहिक तरीके से रह सकते हैं मियां बीवी। परदेश में ये प्रश्न नहीं। परदेश में तो अगर आश्रम बना तो खट से बन जाता है, क्योंकि सब अपना बिस्तर वगैरह लेकर के चले आते। अभी क्या हुआ? तो घर भर बेचते, अब तो हम आश्रम में रहते। अब हमारे सारे प्रश्न ही छूट गए, क्योंकि अब न तो घर का किराया देने का, न कोई आफत, न कोई चीज। बस यहाँ रहेंगे, सामूहिक में रहेंगे, जो कुछ पैसा देना है वो देंगे और अपना आराम से रहेंगे। सब लोग मिलकर काम करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आफत आई तो सब लोग मिलकर उठा लेंगे, और कोई ऐसी विशेष बात हुई तो उसका भी आनंद सब लोग उठा लेंगे। वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि इसमें कुछ हमें मिल गया, जैसे हम किसी चीज के हो गए, जिसको कहते हैं बिलोंगिंग। किसी चीज को हम बिलोंग कर गए और हम लोग छुटक छुटक घूमे रहते हैं। अच्छा, उस घर में भी, घर के अंदर भी फिर झगड़े शुरू होते हैं कि साहब ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है, ये बड़ी बहू, ये छोटी बहू, फिर उसका बच्चा, फिर मेरी बहन, फिर ये ठिकाने, उसमें भी झगड़े। क्योंकि ये जो रिश्तेदारी है ये कृत्रिम रिश्तेदारी, ये असली रिश्तेदारी है। कोई किसी का बेटा हो जाए तो उससे उसका रिश्ता नहीं। अगर होता रिश्ता, अगर बनता तो झगड़ा क्यों होता है? मतलब इसमें वास्तविकता नहीं। उसमें फिर छोटी छोटी बात की मांग क्यों होती? एक दूसरों में प्यार क्यों नहीं होता? तो जिस तरह से हम आपको कहते हैं कि बाहर के धर्म सब झूठे हैं, इसी तरह से बाहर के रिश्ते भी सब झूठे। एक एक आदमी को इसकी प्रचिति आएगी। अब कोई कहेगा साहब मेरी माँ को बुला दीजिए, माँ को बुला दीजिए। लंदन में हम थे एक साहब मेरी जान को लगे। तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम इतने पीछे पड़े तो माँ को बुला दे। जब माँ को बुला दिया तो वो रोज कहे माँ इससे तो मुझे छुटकारा करे, मेरी जान खा ले इसके पैसे। मैंने कहा पहले तो कह रहे माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ, मेरी जान खा ली। अब ये कि इसको यहाँ से निकालने की कैसे कोशिश करूं, मैं कैसे इसको निकाल कर दूंगी, मेरे सर खाए। तो मैंने कहा पहले बुलाया क्यों और अब भेज क्यों रहे? वजह ये है कि ये जो रिश्ता था ये रिश्ता सच्चा है, झूठा रिश्ता। अगर सच्चा रिश्ता होता तो एक प्रेम में विभोर मनुष्य है, उसमें ये नहीं भावना आती कि ये मेरा है। मेरा की जो भावना है ये झूठी भावना है, ये सच्ची भावना बिल्कुल नहीं। तो सच्ची भावना आती तो आप मुझे बताइए कि कौन से रिश्तेदारी में आपने देखा है कि एक आदमी को शिकायत हो जाए तो सारे लोग उसके साथ खड़े हो जाए। उल्टे अगर आप सहयोग में आए तो आपकी टांगे खींचे। अगर आप सहयोग में आए तो आपसे कहेंगे चलो फिर हमें ठीक कराओ, तो तुमने हमें ठीक नहीं कराया तो हम तुम्हें सहयोग में नहीं जाते। फिर और भी तमाशे खड़े कर, क्योंकि शिव तत्व ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और शिव तत्व का रिश्ता आप जानते हैं वो चैतन्य से। इस प्रकार की जब आप चैतन्य को महसूस करते हैं, आप जानते हैं कि चैतन्य है, तो आप समझ लेते हैं ये जो दूसरा सामने बैठा है इससे कितना आनंद था, कितना। एक बार कलकत्ते में एक साहब मेरे पास आए, वो मेरे पैर पे आते साहब 8-10 वहां जितने भी सर्जन थे दौड़े दौड़े। क्यों क्या हुआ? नहीं किया, एकदम से तो बदली चलती एकदम खुल गई। और मैं कब जाकर देखे माँ को क्या एक रियलाइज सामने। अब वो सब खड़े हुए, वो बेचारा झुका ही बैठा बैठा, उसको तो छोड़ो, पकड़ लिया उसको। उसका जो आनंद आ रहा था जैसे कि गुलाब के फूल से भी ना है ना कमल के फूल से है, ऐसे उसका मजा उठा रहे। यह असली रिश्ता हुआ। तो बैठे कहाँ थे वहां से भागे भागा, क्या मजा आ रहा है। जब ये मजा आने लग गया तब रिश्तेदारी, यही असली दोस्ती है, यही असली सहयोग की प्रेरणा, प्यार और उसका आनंद। ये सिर्फ शिव तत्व से हो सकता है। अगर आपके अंदर शिव तत्व है
तो आप आपस में झगड़ ही नहीं सकते। आपने गणों को देखा है कि गण कैसे होते हैं कि वो एक इशारे पे कठिन से कठिन काम सब लोग मिलकर करने लग जाते। कठिन से कठिन बात हो उसमें सब जुट करके करने लग जाते। लेकिन अगर हमारे यहाँ शिव तत्व की जब पूर्ण प्रणाली शुरू हो जाती है, मैंने देखा है कि अगर समझ लीजिए कोई चीज अमेरिका में हो गई तो सारे सज उधर दौड़ पड़े। कोई घटना ऑस्ट्रेलिया में हो गई तो सबका चित्त वहां दौड़ पड़े। इतनी बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले इसमें हमें जाना चाहिए क्या हम शिव तत्व में स्थित हैं। शिव तत्व में स्थित होना माने मैं नहीं कहती कि आप सन्यासी बाबा बन के आप, पर अंदर से संन्यास्त भाव आना चाहिए। अंदर से संन्यास्तान्य भाव का कहना यह होता है कि आप इस तरह से कि एक पेड़ के अंदर उसकी शक्ति या उसके अंदर का जो साप होता है वो उड़ता है और हर जगह जाता है, हर पत्ती पे, हर शय पर, हर फूल पर, हर फल पे जाता है, फिर लौट जाता है। इसी प्रकार आपका भी प्यार बिल्कुल निर्वाज पूरी तरह से असंग में डिटैच्ड होगा, तब आप शिव तत्व में स्थित हो। और जब वैसे आप हो जाते हैं तब आपको आप एक दूसरे पर मजा आने लगता है। नहीं तो एक दूसरे को देख करके वो ऐसा बोले, इन्होंने ऐसा किया। शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि मैं किसी झगड़ालू घर में घुस गई, जिसका उसका आपस में झगड़ा, न किसी को आपस में मजा आ रहा है न कोई आपस में प्यार कर रहा है। जिसका झगड़ा उससे, उसका झगड़ा उससे। मैं तो देख देख सोचती है भगवान मैं क्या, यहाँ कुछ मेरा कार्य तो बनने नहीं। लेकिन धीरे धीरे दिमाग ठंडे हो गए, शिव तत्व अंदर स्थापित होने लग गया और अब लोग आपसी प्रेम को आनंद से भोग रहे हैं और जान रहे हैं कि आपसी प्रेम जो है यही सबसे बड़ा। और रिश्तेदारों का भी अनुभव आने लगा, ये क्या चीज है। अपना रिश्ता एक ही चीज से होता है, वो है शिव तत्व। जिस आदमी में शिव तत्व नहीं, जिस आदमी में वाइब्रेशंस नहीं, जिसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं है, उस आदमी से आपका रिश्ता हो ही नहीं। कितनी भी कोशिश कर ले तो भी वो रिश्ता बन नहीं। उसको जब तक उसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं जाएंगे तब तक आप कुछ भी कर लें, आपको उसके साथ मजा आ ही नहीं। या तो आपके वाइब्रेशंस खराब हो जाएंगे या उसके वाइब्रेशंस खराब। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसी के वाइब्रेशंस खराब है तो क्या मेरे खराब हो गए, मेरे खराब है तो क्या इसके खराब हो गए, और एक तरह की सब भ्रांति में स्थिति आ जाए। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि वाइब्रेशंस किसके खराब। तो इसलिए ऐसे आदमी जिनके वाइब्रेशंस ठीक नहीं, उनसे दूर रहना चाहिए। उसमें कोई किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसमें दोनों का लाभ है। अगर आपके अंदर शिव तत्व जागरूक है तो आप उनसे अधिक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दुखकारी या बुरा कहें, लेकिन उनका भी शिव तत्व ठीक करना चाहिए और उनसे भी कहना चाहिए कि आप अपना शिव तत्व को ठीक। क्योंकि अगर ऐसे लोग बीच में आ जाए तो उसमें कभी भी आनंद नहीं आ सकता। जैसे कि कोई कहे कि दूध में आप दही डाल दीजिए, क्या आ गया, सब तो डिटैच है, ऐसा तो होता नहीं। दूध में आपने दही डाल दिया तो दही हो जाए। आप कितनी भी कुछ थ्योरी लगाओ, उस थ्योरी का काम नहीं। उसके सामने जाके प्रार्थना करो, नमस्कार करो, कुछ करो, दूध में आपने दही डाल दिया। और जिन लोगों के वाइब्रेशंस खराब है उनको पूरी तरह से गाइडेंस देना चाहिए, तुम्हारे वाइब्रेशंस ठीक हो जाएंगे, वो सब ठीक हो जाएगा। और तो आपकी शांति और आपके शिव तत्व से वो देख के कहेंगे हाँ ठीक है, ये आदमी कितना शांति में बैठा है, मैं भी ऐसी शांति में क्यों न बैठूं, इस शांति को मैं क्यों न, उसका क्यों न मैं उसका उपभोग। इस तरह का आपका जीवन उस शांति में, सादगी में, प्रेममय में जब घुस जाएगा तो दूसरे लोग जिनके वाइब्रेशंस ठीक नहीं, जो अभी इतने बैठे नहीं है सहयोग में, वो धीरे धीरे बैठे। लेकिन सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हित का है, हमारा हित इस तरह से पागल जैसे घूमने में और भटकने में नहीं। उस अविनाशी चीज को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम इसीलिए सहयोग में भी आए, और सहयोग में आकर के हम अगर आधे अधूरे रह गए तो क्या फायदा, हमने क्या प्राप्त किया।
उसने, हम जिस रास्ते पे आए हम पीछे में बैठ गए, मंजिल तक तो पहुंचे। इस शिव तत्व के बारे में मैंने अनेक बार बातें करी है और बताया, लेकिन दिल्ली वालों के लिए विशेष रूप से शिव तत्व की बात करनी चाहिए। शिव तत्व की बात ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हृदय आपका पकड़ जाता है तो आपका आज्ञा चक्र, और मैं तो उल्टे कहूं, अगर आपका आज्ञा चक्र पकड़ गया सामने का, तो आपका हृदय एकदम से संकुचित होता है, एकदम छोटा होता है। और जब आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, आपका हृदय एकदम ठंडा ठंडा उसमें से पैदा। आज्ञा चक्र चढ़ता है अहंकार से, क्योंकि आप इस राजधानी में रहते हैं और सब घोड़े पे सवार लोग हैं। आप भी सोचते हैं बच्चों को जरा, पता नहीं क्यों बच्चे रो रहे हैं, इनको देखना चाहिए, जो बच्चे रो रहे हैं उनको देखना चाहिए। दिल्ली शहर में मेरी जब शादी होके आई तो मुझे लगा कि ये कोई अजीब दुनिया है। यहाँ लोग चलते तो जमीन पर है, पर गर्दन उनकी ऊपर ही चलती है। और आप जब तक कूद के उनसे बात नहीं करिए, उनको कुछ समझ में नहीं आए। एक अजीब अहंकार की दुनिया। जब उस टाइम में जब देखा, जबकि मैं बहुत छोटी और भोली सी थी, मुझे हंसी आती थी कि ये सब पागल लोग जा कहाँ रहे, सीधे जमुना जा रहे हैं, किसी घाट पे जा रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आता। तो मैं देखा करती थी और मुझे बड़ा आश्चर्य, सबकी गर्दन यहां से उठकर 6 फुट चलती। और इसका कारण ये कि अहंकार, इतना अहंकार। एक चपरासी भी अगर बीवी घर में आए तो वो शनील के सूट पहन करके, लिपस्टिक लगा करके पहुंची घर में। मैंने सोचा कोई मेमसा भी होगी, नाखून लगाए हुए, लिपस्टिक लगाए हुए, चूड़ियां पहनी हुई, बिल्कुल फैशनेबल। और मैं तो उसके सामने बिल्कुल ही गांव की औरत लग रही थी। तो मैंने सोचा कोई मेम साहब होगी, तो मैंने उनसे कहा चाहिए, उनको सोफे पे बिठा दिया। वो बैठे ना, मैंने कहा आप बैठिए बैठिए। मैं कैसे बैठ सकूं? मैं कहा क्यों, आप बैठिए, आप हैं क्या? मैं आपके चपरासी की बीवी। तो मैंने कहा कोई हल्के बैठ जाइए अब आप। और फिर इतनी उसमें घमंड थी, मैंने देखा कि उतनी तो कलेक्टर के नहीं हो। तो मैंने कहा जब इनका यह हाल है तो कलेक्टर की भी क्या होगी? और इस कदर अहंकार और झूठ और इतनी कृत्रिम जिंदगी की मैं तो नागपुर से आई थी, मुझे तो लगा कि ये है दुनिया, कैसी दुनिया है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजीब अजीब से अनुभव आने लग गए। जैसे हमारे पति आए तो वो शास्त्री जी के साथ थे। समझ ऐसा दुनिया में तो बड़ी भारी नौकरी, मुझे तो समझ में नहीं आता इसमें क्या बड़ा भारत बना। तो एक हमारी सहेली हमें मिली, वो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, वो तो हमसे बात ही नहीं करे। तो मैंने कहा कि भाई नमस्ते नमस्ते, तुम कहाँ रहती हो? तो तब हमें एक मीना बाग में एक जगह मिली। पहले मीना बाग में रहती, गणपति क्या करते हैं? अरे कुछ करते ही हैं, सरकारी नौकरी है, ऐसा भी क्या तो आफ्टर ऑल ये मीना बाग में तुम रहती है, किससे शादी कर रही थी? तुमको और कोई नहीं मिला?